Hello everyone, welcome back to the English Birdie. In our silent letters journey, we have already learned about silent K, B, W, and L. Today, we are moving ahead and learning two more important silent letters, silent H and silent G. When is letter H silent? H is silent at the beginning of a word, especially in words borrowed from French language. For example, honest. We spell it as HONEST, but we pronounce it as honest, not honest. Honest का मतलब होता है ईमानदार. For example, he is an honest person. R. We spell it as HOUR, but we pronounce it as R, not हार. आर का मतलब होता है घंटा. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू आफ्टर 1 hour. Our next word is heir. We spell it as HEIR, but we pronounce it as heir, not hair. Heir का मतलब होता है वारिस. For example, he is the heir to the business. Now comes honor. We spell it as HONOR, but we say it as honor instead of honor. Honor का मतलब होता है सम्मान. For example, it is an honor to meet you. Now comes an easy tip. अगर word vowel sound से start हो रहा है, even though H is written, then H is silent. Now let's learn about silent letter G. G is silent when it comes before N. For example, now. We spell it as GNAW, but we say it as now instead of gnaw. Now का मतलब होता है दांत से काटना या फिर कुतरना. For example, the dog will gnaw the bone. Our next word is gnome. We spell it as GNOME, but we pronounce it as gnome instead of gnome. Gnome. Gnome का मतलब होता है बोना या फिर कहावत. शॉकिंग राइट? इंग्लिश का एक वर्ड और उसके हिंदी में इतने सारे मीनिंग्स. कोई नहीं, हम अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी नोम का एग्जाम्पल देखते हैं. द गार्डन हैज़ अ स्मॉल नोम. आवर नेक्स्ट वर्ड इज साइन. वी स्पेल इट एज SIGN, but we pronounce it as sign instead of saigon. साइन का मतलब होता है संकेत या फिर हस्ताक्षर करना. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज साइन योर नेम हियर. Our last word is foreign. We spell it as FOREIGN, but we pronounce it as foreign instead of foreign. Foreign का मतलब होता है विदेश. इसका एग्जाम्पल है शी स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज. नाउ कम्स अ क्विक टिप. जब जी एन के साथ आए और उसमें जी एन से पहले होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी आए शब्द में, शब्द की स्टार्टिंग में या शब्द के बीच में या शब्द के लास्ट में, जी हमेशा साइलेंट हो जाता है. इंटरेस्टिंग राइट? स्लोली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज बिकमिंग easier. But wait, this journey is not over yet. In the next video, we will learn more silent letters like silent T, silent P, silent D, and many more. Before you go, comment one word where G or H is silent. Like this video, share it with someone learning English,
subscribe the channel The English Birdie and stay tuned for the next part of our silent letters series. See you in the next video.